Yes. Yeah. Okay, great. So anyone know what actually is P&ID? What represents, means what things are there in the P&IDs? Why it is important? Anyone who is working, many people are there here who are working, right? So somebody might know what actually is the P&ID. Have you seen P&IDs? The guys who are working here. So it shows us the line number from where it is coming and in which P&ID it is going through. It is showing the size of the pipe, the fluid that is passing through, whether it Okay, is insulated or not, okay. and So the flow directions basically, can be known. yeah, correct. It's a truly Absolutely. So, representation of process flow. yes, great. So I will add some points here. See, PNIDs contains this information, but let's say if you have a plant running, right? If somebody joins new, like many people are here in the final year, right? I will use both the language. Everyone is comfortable in Hindi and English. I will use both the language here for better and effective understanding. Okay. So we have many people who are in the final year also, right? So आप लोग अभी जाओगे, ठीक है, इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे after completing your final year, getting your graduation, completing your graduation, right? So and some people are here who are already working in the industry. Let's say a project is going on, and the person who are currently joined in the industry, they have started working on that project from the scratch. Okay, so they know each and everything from the start itself, during the commissioning point of view, during basic engineering and detail engineering activities. Okay, so उन्हें सब पता होता है. But let's say after 5 years or 6 years of completion of project, a new guy joined, like who have just completed the graduation and have joined the plant, and they have given the project for debottlenecking, let's say, like capacity enhancement in the same plant, or like to manufacture some other products in the same plant. So how will that guy cope up with the other guy who has already been worked in that plant? So in that case, PNID will play a major role. Okay, so what a new guy has to do, even for the old guy who are there already working, ठीक है, उन्हें भी 5 साल के बाद याद नहीं रहेगा कि कौन सा लाइन कहाँ से जा रहा है, क्योंकि कहा हमेशा कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन प्लांट में चालू होते हैं, ठीक है, फॉर कैपेसिटी एनहांसमेंट, यूटिलिटी एक्सपेंशंस, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली. ओके, सो इन दैट केस पीएनआईडी प्लेज अ मेजर रोल. पीएनआईडीज में सिर्फ आपको फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है वो पीएनआईडी में आपको दिखेगा कि ये पीएनआईडी से वो पीएनआईडी में जा रहा है लाइन, ठीक है, ये पीएनआईडी से वो पीएनआईडी में जा रहा है, लेकिन ओवरऑल जो बंच ऑफ पीएनआईडीज होते हैं ना, एक प्लांट के अराउंड 100 to 150 पीएनआईडीज भी हो सकते हैं अगर छोटे प्लांट है, तो इट कैन बी अराउंड 20 to 25 ऑल्सो. तो पीएनआईडी डिपेक्ट्स योर ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कि वो आप का पीएनआईडी से आपको प्लांट में बिना गए आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा लाइन आपका कहाँ से जा रहा है, किधर जा रहा है, कौन से रिएक्टर में कनेक्टेड है, कौन से हीट एक्सचेंजर में कनेक्टेड है, कौन से कॉलम्स में कनेक्टेड है, कौन से ड्रायर्स में कनेक्टेड है, या कौन से फिल्टर्स में कनेक्टेड है. ठीक है. सो अब पीएनआईडी में आपको एक डायग्राम दे दूंगा तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे. ठीक है. Some might be knowing some things who are already working, but in detail, if I talk about like how the things goes in EPC industries, okay, and how the things go in the big manufacturing companies, the reading of P&ID is very very important. There are very little information contains in the P&ID. ठीक है. बहुत सारी चीजें उसमें होती है जो चीज हमें पता भी नहीं होती है, हम नजरअंदाज भी कर देते हैं. जनरली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आप देखोगे तो वो लाइन ट्रेस करते रहते, बस उन्हें लाइन ट्रेस करना है. ठीक है. दे ओनली यूज पीएनआईडी फॉर लाइन ट्रेसिंग. Depends on department to department. There are many departments working in the chemical industry, right? The mechanical engineers also work there, electrical engineers also work there, instrumentation engineers also work there. The PNID document is like the handbook for everyone who is working in that chemical industry.
or who will be working in that plant, you can say. It's not only for the chemical engineers, right? So if some instrumentation engineer want to trace some instrument, so he has to look the P&ID, he has to search the tag number which he has given, or the design engineer has given for that particular instruments. So based on that only he can trace that instruments in the plant, and based on that he can do whatever. But first of all he needs to, he can't go directly into the plant, right? So the understanding of P&IDs is very, very important and critical. Yeah. So we will be starting here that an overview of the diagram, its purpose and use. So any final year students who have some kind of subject of chemical engineering drawing in their college right now? Do you have the subject chemical engineering drawing? Or any other people also you can say who are already working in the chemical industry? Have they studied the chemical engineering drawing subjects? Or like that, did you had any subject like that? Okay. See, the main objective of this lecture, what we need to understand is what actually PNID is, the information and details it provides. Okay. The industry standard symbols which are used, ISO standards. Okay. For making PNIDs, ISO standard symbols are used. Some of the guys might have studied the chemical engineering drawing subjects. Why I was asking, because हम लोग शीट्स बनाते थे, ठीक है, A3 शीट्स पे ड्राइंग बनाते थे, ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक्स, राइट. सो हम शीट्स में सिंबल्स भी बनाते थे. इफ यू रिमेम्बर समबडी एल्स who have who had the subject in the final year during the curriculum, right? So वहां पे हम जो symbols बनाते थे, there some things are same, some symbols are changed or different, because the industry follows the ISO standards of symbols. Okay, the PNID is prepared considering the ISO symbol. In fact, still in many industries, if I say, they have their own legend sheet. Now, what is legend sheet? Legend sheet is a sheet which every company has to understand and read their own P&IDs. Okay. See, line numbering format, instrumentation tagging numbering format, everything has to given a number, has to be given that number. ठीक है, सबका नंबरिंग होना चाहिए, सबका नंबरिंग होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से किसी भी लाइन का नंबर आप छोड़ सकते हो. ठीक है, यू हैव टू नेम ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज प्रेजेंट इन द PNID. Otherwise, after sometimes you can't even trace that thing in the plant. Okay, so the symbols which are used generally is as per ISA standards, but still in many manufacturing companies, if I say, there are some other symbols are also used depending on the industry to industries, and in some cases they add that symbol in the legend sheet. So legend sheet is a sheet which is used to read the P&ID of that particular industry. Legend sheet is same for that industry itself. Let's say someone is working in PI industry, someone is working in oil and gas industry. The both industry will have their own legend sheet. Okay. So if if let's say X company is there, who is let's say they are not preparing the PNID by their own standards. They have not developed their own standards. They are just using ISA standard symbols. So they, or they will not be having the legend sheet. They might be having and they might not be having, because ISA standards are generalized, if I say, and common to everyone. So anyone can download that ISA standard symbols from API standards. Also, they can download the ISA standard symbols, right? So
Fourth point is how the P&ID is utilized by the client, plant personnel, okay, and how the P&ID works with loop diagrams. See, the P&ID is utilized by three categories. If a chemical engineer is graduating from a let's say chemical engineering college, so after college, a chemical engineer this has the opportunity to work in several industries. So there are the industry, there are categorization of the industry, right? So the industry is categorized into આપણે manufacturing. નાસ્તા બેન આવે એ અને દામુ અને તું અહીંથી વૈષ્ણોદેવી જો એમાં જવું. Hello, can you mute the mic? Okay. So where I was, yeah. So P&ID is utilized by several industries. The person who will be graduating as a chemical engineer has the opportunity to work in manufacturing industry, EPC industry, and there is also a third industry called vendors, or you can say a consultant point of view. ठीक है. So EPC industry और consultant are same, more or less same. ठीक है. EPC industry क्या करते हैं? Let's say there is a client. कोई एक इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उन्हें बेसिक इंजीनियरिंग एक्टिविटीज का अपना काम कराना है, सो दे विल go to EPC industries or a consultant, or they will hire a consultant for doing their own project. ओके, सो वो लोग अपना जो भी प्रोडक्ट का मटेरियल बैलेंस, मास बैलेंस है, वो सब प्रिपेयर करेंगे, पीएफडी बनाएंगे, प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाएंगे, एंड दे विल शेयर इट टू द कंसल्टेंट्स और ईपीसी टीम. अब ईपीसी टीम क्या करेगी? दे विल अंडरस्टैंड देयर ओन प्रोसेसेस एंड बेस्ड ऑन दैट, considering their process, they will prepare the P&ID. So that's why the point is here that the P&ID is utilized by the client. Client means if the P&ID is prepared by an EPC industry, so the P&ID will be utilized by their client. Okay. After that, when the P&ID is delivered to the client, the P&ID will be used by plant personnel. अब क्लाइंट के पास चला गया, अब क्लाइंट के पास जाने के बाद क्या होगा? प्लांट में जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको काम करना है, जो काम करने वाले हैं, जो न्यू हायर्स है, उनको ये पीएनआईडी दिया जाएगा ताकि वो समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए कि क्या प्रोसेस उनका रहने वाला है, कहाँ पे क्या एडिशन होगा, कहाँ पे क्या चार्जिंग होगा. ठीक है. Further, how the P&ID works with loop diagram. So these are the objectives what will be understanding from this lecture. So before starting, we will learn in detail that what actually is a P&ID. So P&ID का abbreviation piping and instrumentation diagram है, that everyone know. Some might not be knowing. So here is the abbreviation, that it is piping and instrumentation diagram. The name itself suggests that the P&ID contains all the information of pipings and instruments. Okay, so generally depicts process system with a plant. So P&ID generally depicts process system with a plant. Each process has its own P&ID. ठीक है. अभी n number of process होते हैं plant में. ठीक है. There are multiple processes going on in the plant at the same time. Some, let's say if 10 people are working, so some might be working in the nitration reaction, some might be working in the sulfonation reaction, some will be working in the hydrolysis. Okay, there are n number of reaction and each process has its own P&ID because plants will be different, vessels will be different, reactors will be different, columns will be different, heat exchangers will be different, pumping systems will be different. Okay, so the P&ID will be based on the what process they are working on. Second point is that the P&ID contains a detailed compilation of a process system. A detailed compilation किस टर्म में बता रहे हैं हम? डिटेल कंपाइलेशन में क्या क्या आ जाएगा? सब कुछ. लेट्स से आपके रिएक्टर पे कितने वॉल्व्स है, रिएक्टर के आउटलेट में कितने वॉल्व्स है, इनलेट में क्या जा रहा है, व्हाट रॉ मटेरियल्स यू आर चार्जिंग इनटू द सिस्टम, व्हाट प्रोडक्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम द सिस्टम, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, what is the pressure of that system, what is the design pressure, what is the design temperature of that system. Each and everything in detail compiles. Okay, and the P&ID is formed. So third point is generally provides a mechanical overview of the process system. Some electrical detail is shown.
अब इलेक्ट्रिकल डिटेल सम लेट्स से कि रिएक्टर है, अब एजिटेटर है, तो एजिटेटर का इलेक्ट्रिकल डिटेल्स उसमें रहेंगे कि व्हाट इज द मोटर रेटिंग ऑफ दैट लाइक ऑफ दैट एजिटेटर, ठीक है, उसका आरपीएम कितना होगा, बिकॉज रिएक्शंस हम कर रहे हैं तो कितने से कितने आरपीएम तक हमें रखना चाहिए, कितना आरपीएम हम रखने वाले हैं। लेट्स से यू चेंज द प्रोसेस, लेट्स से first of all your process is going on nitration, and after that you shift the process from nitration to hydrogenation, let's say, so the rpm will not be same. so उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका जो खुद का रिएक्टर है वो कितने से कितने आरपीएम के बीच में डिलीवर करेगा, उसमें कितना आरपीएम तक आप मिक्सिंग कर सकते हैं, मिक्सिंग इंटेंसिटी क्या रख सकते हैं। सो दैट इंफॉर्मेशन आल्सो इज समवॉट मेंशन इन द पीएनआईडी, ताकि आपको डिटेल में दूसरे डॉक्यूमेंट्स में ना जाना पड़े, तो जितना हो सके डिटेल कंपाइलेशन करके वो पीएनआईडी को बनाया जाता है। देन कम्स द टाइटल ब्लॉक which generally provides the name or description of the process system. टाइटल ब्लॉक में जनरली डिस्क्रिप्शंस होते हैं, लिखे होते हैं कि who have prepared the PNID, who have checked the PNIDs, which consultant have prepared the PNID, what is the name of clients, and for which process it has been manufactured. Okay, so further fifth point is the base document for controlling and documenting changes to the process system precedes revisions to the loop diagrams, isometrics, control schematics, etc. अब पीआईडी क्या है, सबसे पहले कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट बनती है पीएफडी के बाद क्लाइंट से जब हमें मिलती है इन ईपीसी इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अगर खुद भी ग्रीनफील्ड लेट्स से ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ओके, तो वो सबसे पहले पीएनआईडी ही बनाएंगे। पीएनआईडी जो है वो सारे डिपार्टमेंट्स का एक बेस डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, इट इज नॉट ओनली यूज्ड बाय द केमिकल इंजीनियर्स, इट दैट डॉक्यूमेंट इज यूज्ड बाय ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। अब ये पीएनआईडी बेस्ड डॉक्यूमेंट्स की तरह कैसे काम करेगा, जैसे आपने पीएनआईडी बना दिया, लेट्स से एक प्रोसेस इंजीनियर ने पीएनआईडी बनवा लिया, अब वो पीएनआईडी इट विल गो टू लेट्स से सिविल इंजीनियर। ओके, सिविल इंजीनियर क्या करेगा पीएनआईडी का, कोई बता पाएगा सिविल इंजीनियर व्हाट विल अ सिविल इंजीनियर डू विद पीएनआईडी? PNID also shows the slope, like which in- uh, equipment is above and which one is the below. So if you need to create the foundation, so at ओके, that time civil engineer can use that. यस, सो फर्स्ट इज फॉर द फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन कैसा रहेगा प्लांट का, फॉर दैट पीएनआईडी विल हेल्प अ सिविल इंजीनियर। अनदर व्हाट एल्स, देखो सिविल इंजीनियर का काम क्या है, प्लांट खड़ा करना, बीम्स लगाना, फाउंडेशन लगाना, हर फ्लोर का स्ट्रेंथ कितना रहेगा। तो सिविल इंजीनियर पहले क्या करेगा, व्हाट विल अ सिविल इंजीनियर्स डू, पीएनआईडी में और भी इंफॉर्मेशन होते हैं, पीएनआईडी में ये भी इंफॉर्मेशन होता है कि विच इक्विपमेंट इज इंस्टॉल्ड और विल बी इंस्टॉल्ड ऑन विच फ्लोर, ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन वी कन्वर्ट दैट पीएनआईडी इनटू अनदर डॉक्यूमेंट कॉल्ड इक्विपमेंट लिस्ट। सो हर एक पीएनआईडी के साथ मीन्स अ सेट ऑफ पीएनआईडीज के साथ एक और डॉक्यूमेंट हमेशा जाती है जो होती है वो इक्विपमेंट लिस्ट। इक्विपमेंट लिस्ट में क्या होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमारे सारे पीएनआईडी को मिला के कितने इक्विपमेंट्स है, उसका टैग नंबर, फॉर विच प्रोसेस इट इज यूज्ड, कौन से फ्लोर पे लगने वाला है, फ्लोर का लेवल क्या है, उसका डिजाइन प्रेशर क्या है, डिजाइन टेम्परेचर क्या है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। पीएनआईडी में भी कौन सा रिएक्टर, कौन सा कॉलम, कौन से फ्लोर पे है, that contains each and every information. So civil engineers, what will they do? They will prepare a equipment layout with the help of PNID. PNID उनके लिए बेस डॉक्यूमेंट रहेगा टू प्रिपेयर इक्विपमेंट लेआउट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल टीम। तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर्स का भी थोड़ा रोल आ जाता है। अब इक्विपमेंट लेआउट में क्या आ जाएगा, इक्विपमेंट लेआउट जो होता है वो फ्लोर वाइज होता है। ग्राउंड फ्लोर का इक्विपमेंट लेआउट हो गया, इक्विपमेंट लेआउट इज बेसिकली लेट्स से आप अज्यूम करो कि एक बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है, अब बिल्डिंग खड़ी है तो बिल्डिंग का जो टॉप व्यू आप देखोगे,
हर फ्लोर का टॉप व्यू इज योर इक्विपमेंट लेआउट। सो लेट से अगर मैं फोर्थ 4 माले की मेरी प्लांट है, ठीक है, माय प्लांट इज हैविंग 4 फ्लोर्स। सो ग्राउंड फ्लोर का टॉप व्यू, फर्स्ट फ्लोर का टॉप व्यू, सेकंड फ्लोर का टॉप व्यू, थर्ड फ्लोर का टॉप व्यू, फोर्थ फ्लोर का टॉप व्यू, this combination of all the top views of each and every floors will be my process layout, equipment layout। ठीक है, तो हर एक फ्लोर पे कौन कौन से इक्विपमेंट्स कहाँ कहाँ, हमारा फ्लोर भरेगा कैसे, हमारा जो फ्लोर है वो कैसा दिखेगा जब हम एक इक्विपमेंट्स इंस्टॉल कर देंगे, तो वो चीज इक्विपमेंट लेआउट में आ जाएगी। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ पीएनआईडी इक्विपमेंट लेआउट बनेगा। अब इक्विपमेंट लेआउट बनने के बाद सिविल इंजीनियर क्या करेगा, उसके पास सब कुछ डिटेल्स आ जाएंगे। अब जैसे रिएक्टर्स, आप अज्यूम करो फर्स्ट फ्लोर पे 10 रिएक्टर्स लगे, ठीक है, कुछ कोई रिएक्टर 5 मीटर क्यूब का है, कोई रिएक्टर 10 मीटर क्यूब का है, कोई रिएक्टर 1 मीटर क्यूब का है। ठीक है, लेट्स से फर्स्ट फ्लोर का टोटल जो वॉल्यूम है वो 25 मीटर क्यूब का है, सेकेंड फ्लोर पे आपका टोटल लगा है वो 35 मीटर क्यूब का है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10 मीटर क्यूब। अब ये इक्विपमेंट्स का भी खुद का वेट होता है, ठीक है, तो अब उस वेट को वो क्या करेंगे, वो वेट को बेसिस पे वो अपने फ्लोर का स्ट्रेंथ डिजाइन करते हैं कि मुझे इतना फ्लोर को सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट देना है, तो उस हिसाब से उन्हें स्लैब डालनी होती है। ठीक है, सिविल इंजीनियर्स को स्लैब डालनी पड़ेगी, उस हिसाब से उन्हें अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा, उस हिसाब से उनको बीम्स डालनी होगी। ठीक है, सो इन दैट केस पीएनआईडी विल बी हेल्पफुल फॉर देम। पीएनआईडी ये बेस डॉक्यूमेंट हो गया उनके लिए। फिर वो डॉक्यूमेंट बीम्स वीम सब कुछ कैलकुलेशन वो लोग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद आर्किटेक्चरल टीम के पास जाएगा। आर्किटेक्चरल टीम क्या करेगी, आर्किटेक्चरल टीम क्या करेगी, कोई बताएगा? What will the architectural team do after civil drawings? Architectural teams क्या करेगी, जैसे ही They will do strength, for battery limit buildings and service buildings, whichever required for plant. okay, that is one case. So आर्किटेक्चरल टीम बाहर का तो काम करेगी, जैसा अभी इन्होंने बताया कि बाहर आपका बैटरी लिमिट वो डिसाइड करेंगे कि कहां से कहां तक आपका जाएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इनसाइड अब सिविल ने क्या किया है, सिर्फ फ्लोर स्ट्रेंथ वगैरह ये सब ही डिसाइड किया। अब आर्किटेक्चरल टीम क्या करेगी, दे विल दो, देखो प्लांट में दो मूवमेंट होते हैं, एक मैन मूवमेंट होता है, एक मटेरियल मूवमेंट होता है, दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, मैन मूवमेंट एंड मटेरियल मूवमेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। जहां से मैन मूवमेंट हो रहा है वहां से मटेरियल मूव नहीं होगा। इवन जो प्लांट के एंट्री गेट्स होते हैं, मटेरियल गेट अलग होता है, मैन गेट अलग होता है। ठीक है, तो वो सारे गेट्स का डिजाइन, स्टेयर्स का डिजाइन, इनलेट एंड आउटलेट ऑफ मैन एंड मटेरियल, ये भी आर्किटेक्चरल टीम डिजाइन करती है। आपकी सीढ़ी कहाँ पे रहेगी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, इमरजेंसी सीढ़ी कहाँ पे रहेगी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए या फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आने के लिए, इमरजेंसी गेट्स कहाँ कहाँ होंगे, कौन कौन से फ्लोर्स पे लोकेटेड होंगे, ये सारी चीजें आर्किटेक्चरल टीम डिसाइड करती है। सो कंसिडरिंग द पीएनआईडी एंड कंसिडरिंग द प्रोसेसेस, कहाँ पे hazardous प्रोसेस है, कहाँ पे hazardous प्रोसेस नहीं है, डिपेंड्स ऑन दैट दे डिसाइड की इमरजेंसी गेट्स कहाँ पे होगी। ठीक है, सो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा पीएनआईडी जो केमिकल इंजीनियर ने बनाया हुआ है, जो प्रोसेस इंजीनियर ने बनाया हुआ है, हाउ इट इज हेल्पफुल टू ईच एंड एवरी प्लांट। अब समझो ये पीएनआईडी ही गलत रही तो क्या हो सकता है, आगे के सारे जो डिपार्टमेंट्स है उन्हें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जा सकती है, आगे की सारी डिजाइनिंग भी रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, सो ये सारी चीजें मैटर करती है, इसीलिए हम इसको बेस डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। इट इज द बेस डॉक्यूमेंट्स फॉर कंट्रोलिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग चेंजेस टू द प्रोसेस सिस्टम।
precedes revision to the loop diagrams, isometrics, control schematics, etc. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये आर्किटेक्चर के पास जाएगी, सिविल के पास जाएगी, वैसे ही फिर ये इलेक्ट्रिकल के पास जाती है। ठीक है, वो लोग लोड, इलेक्ट्रिकल लोड हर फ्लोर्स पे क्या रहेंगे वो निकालते हैं, उसके हिसाब से वो लोग फिर एमसीसी पैनल्स डिजाइन करते हैं, वहां पे कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ पे क्या चलेगा। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन टीम के पास जाता है, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेरा कहाँ कहाँ लगेगा, वो उसके लिए उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे है। ठीक है, सो दे विल प्रिपेयर देयर ओन लिस्ट, उसके हिसाब से वो काम करेंगे। ठीक है, अब लेट से प्लांट रनिंग कंडीशन में है, आप कुछ मॉडिफिकेशन करा रहे हो, मॉडिफिकेशन कराने के बाद भी आपको वो पीएनआईडी को अपडेट करना है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन, इट इज अ बेस डॉक्यूमेंट फॉर कंट्रोलिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग चेंजेस। आप कुछ मॉडिफिकेशन करा रहे हो तो मॉडिफिकेशन करा के सिर्फ प्लांट में करा के नहीं छोड़ देना है। अब प्लांट में आपने करा दिया, पीएनआईडी में अपडेट नहीं किया तो क्या होगा, आपको खुद को कल नहीं पता होगा कि आपने वो मॉडिफिकेशन कराया है कि नहीं कराया है, वो लाइन है कि नहीं, क्योंकि आप तो हर बार पीएनआईडी जाके चेक करोगे, बाद में प्लांट में जाके ट्रेस करोगे। तो ये चीज एक केमिकल इंजीनियर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम प्लांट में तभी आती है जब पीएनआईडी अपडेट नहीं होता है, एंड दिस इज ट्रू। ओके, पीएनआईडी अपडेट नहीं होता है तो बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको लाइन ट्रेस करने में बहुत इश्यूज होता है, क्योंकि जब एक बार प्लांट खड़ा हो जाता है, व्हेन द प्लांट इज इन रनिंग कंडीशन एन नंबर ऑफ लाइंस आर देयर। ठीक है, आप एक केमिकल प्लांट को दूर से देखोगे तो आपको सिर्फ पाइपलाइंस दिखाई देंगे। ठीक है, पाइपलाइंस इज द हार्ट ऑफ अ केमिकल इंडस्ट्री। उसके नेटवर्क्स जो है कहाँ कहाँ से निकलेंगे, कहाँ कहाँ से घुसेंगे, वो उससे आपको आप ट्रेस ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, so that's why updation of P&ID is very important. It is always necessary to maintain the decorum of P&ID. सारी कंट्रोल स्कीमेटिक्स उसमें लिखी होती है, सारे इंटरलॉक्स भी उसमें मेंशन होते हैं पीएनआईडी में, कौन सा इंस्ट्रूमेंटेशन अब आपके प्रोसेस में आप क्या चार्ज कर, लेट से आप 2 रॉ मटेरियल चार्ज कर रहे हो। ठीक है, तो लेट से आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, आप 2 रॉ मटेरियल चार्ज कर रहे हो। ठीक है, अब 2 मटेरियल चार्ज करने के बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, आपका बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, गाइस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा. Temperature. Temperature is coming out. ओके, एनीथिंग एल्स, not only temperature, the pressure of the system will Pressure. also increase because both are directly proportional. So उस केस में क्या होगा, आपको इंटरलॉक देना होता है। अब ये टेम्परेचर और प्रेशर कौन सेंस कर रहा है कि रिएक्टर में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स ने हमारे सिस्टम में लगाए हुए हैं, टेम्परेचर सेंसर्स एंड प्रेशर सेंसर्स, ये सेंस करेंगे। ये सेंस करके फिर जो टेम्परेचर इंडिकेटर्स एंड प्रेशर इंडिकेटर्स है, वो हमें वो टेम्परेचर और प्रेशर सेंस करके वो चीज रीडिंग के तौर पे हमें दिखाएंगे। ठीक है, सो ये सारी चीजें भी पीएनआईडी में होती है कि वो वहां पे सेंसर लगा है, फिर सेंसर के साथ उसका इंडिकेटर भी है, फिर इंडिकेटर के साथ अगर उसके थ्रू हमें कुछ कंट्रोल करना है तो कंट्रोलर भी है। ठीक है, तो लेट से टेम्परेचर इंडिकेटर कंट्रोलर भी है हमारे पास। तो क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेट से हमने कुछ एक सेट पॉइंट दे दिया उसको कि इतना टेम्परेचर ही मेरा मैक्सिमम जाना चाहिए। अब किसी ने कोई एक रॉ मटेरियल डंप कर दिया लेट से, ठीक है, एक रॉ मटेरियल डंप कर दिया तो क्या होगा, मेरा हीट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, मुझे तो स्लोली चार्जिंग करना था, my heat of reaction will increase. In that case what will happen, my temperature will shoot up, my pressure will shoot up, so it can increase the pressure of my system and it can go wrong. Okay, हम मेरा रिएक्टर फट सकता है। ठीक है, तो उस केस में मेरा टेम्परेचर सेंसस क्या करेगा, Doubt is temperature and sir, doubt sir. Is temperature and pressure is directly proportional or indirectly proportional? yeah, it is directly proportional as per ideal gas law, what we are having, PV is equal to nRT, right? So pressure is directly sir. proportional to the temperature. Okay sir, thank you sir. Okay,
सो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो जो सेंसर, लेट से आपने 60 डिग्री सेल्सियस का एक सेट पॉइंट दिया है, ठीक है, तो अब क्या होगा, 60 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुंचेगा तो टेम्परेचर सेंसर जो है सेंस करके वो टेम्परेचर दिखाएगा एंड कंट्रोलर विल टेक एन एक्शन। वो एक्शन किसको देगा, वो एक कंट्रोल वॉल को देगा जहां से चार्जिंग हो रही है, ठीक है, चार्जिंग लाइन में कंट्रोल वॉल होगी, वो वो रिसीव करेगा सिग्नल किससे, टेम्परेचर इंडिकेटर कंट्रोलर से, कि भाई बंद कर दे, मेरा टेम्परेचर इतना आ गया है वरना प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, तो कंट्रोल वॉल क्या करेगा, वो बंद कर देगा। तो साथ में आपके रिएक्टर में जैकेट होंगे, जैकेट में यूटिलिटीज होंगी। यूटिलिटीज क्या होती है, डू यू हैव एनी आइडिया यूटिलिटीज क्या होती है? वो भी पीएनआईडी में दिखाई जाती है कि आपके रिएक्टर के जैकेट में कौन कौन सी यूटिलिटीज के प्रोविजंस दिए हुए। व्हाट इज यूटिलिटी? Utilities like steam, ओके, wash DM water, motor, यस, wash water, ओके, Fire water. plant air, compressed air, ओके, generator, ओके, nitrogen, Sir, the process materials which doesn't take directly part in the processes. यस, एब्सोल्युटली, दिस इज द राइट आंसर। इन शॉर्ट कुछ भी हो सकता है यूटिलिटी, कोई भी ऐसा मटेरियल जो प्रोसेस में पार्ट नहीं ले रहा है, दैट इज योर यूटिलिटी। वेरी गुड, ओके, तो वो यूटिलिटी कुछ भी हो सकती है। अभी आपका प्रोसेस 50-60 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, आप में से बहुत लोगों ने अभी यूटिलिटीज के बहुत सारे नाम बताए। चिल्ड वाटर कहा गया, चिल्ड वाटर भी एक यूटिलिटी है जिसका दैट यूटिलिटी प्ले अ वेरी मेजर रोल। उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस होता है, 5 to 7 डिग्री सेल्सियस होता है। चिल्ड ब्राइन होता है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर -20, -5, -30, -50 डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्राइन। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन होता है जिसका टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस भी, हमको क्रायोजेनिक्स में जाना है तो वो टेम्परेचर्स लगते हैं, ठीक है। सो इसमें से यूटिलिटीज देके हम उसके टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी पीएनआईडी में होती है, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है, बेसिक व्यू ऑफ अ पीएनआईडी, ठीक है, कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हम देखेंगे शॉर्ट शॉर्ट में, स्क्रीनशॉट्स लेके। मैं एक पीएनआईडी आपको डायरेक्ट नहीं दिखा रहा हूँ, दैट विल कंफ्यूज सम कैंडिडेट्स हियर, ठीक है। सो क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगा पीएनआईडी में, एक शॉर्टकट में वो हम एक बेसिक व्यू देखेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पाइपलाइंस आपको दिख रहे हैं, वॉल्स आपको दिख रहे हैं, तो एक एक चीज हम देखेंगे क्या क्या हमें दिखा रहा है। आप देखो ये रिएक्टर है, ठीक है, लेट से कोई भी रिएक्टर या वेजल है, उसका टॉप है, ये टॉप में ये डबल लाइन क्या शो कर रहा है? डज एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया अबाउट दिस डबल लाइन? Flange, व्हाट इज? यस, flange. दैट शोज अ फ्लैंज, बट फ्लैंज ऐसे नहीं है। फ्लैंज कनेक्शंस कहाँ पे आ जाएंगे आपके? यहाँ पे आ जाएंगे, ये जैसे दिखाया आपका, ये सिंगल वॉल आपका कनेक्टेड है, दिस इज फ्लैंज, फ्लैंज से आप वॉल कनेक्ट करोगे, दिस वन थिंग इज फ्लैंज। That is एक nozzle लाइन में terminal, ड्रैग, nozzle terminal points. Nozzle yes terminal this is, point. yes this is nozzle terminal points, okay। ये आपका एक फ्लैंज नोजल से कनेक्टेड है, that is that thing। अब मुझे बताओ, ये वॉल के साथ आपका यहाँ पे एक लाइन दिया और ये वॉल के साथ यहाँ पे नहीं दिया है, what is the difference? Flange connection है, एक वेल्ड कनेक्शन है। Weld So can you connection, please repeat? Hello. yes, what we have to repeat? One is the flange connection and one is the welded connection, maybe socket weld or butt weld. सी, पीएनआईडी में हम वेल्डेड कनेक्शन ऐसे नहीं दिखाते, ये स्क्रूड कनेक्शन बोलते हैं। जब भी आपका डायरेक्ट लाइन से कनेक्टेड होता है, ये स्क्रूड कनेक्शन में आ जाता है। वॉल को आप वेल्ड करके बहुत कम केस में लगाते हैं, मैन्युफैक्चर जनरलाइज प्रोसेस जो है, स्टैंडर्ड प्रोसेस, वॉल को आप वेल्ड करके नहीं लगा सकते पाइपलाइन में, ठीक है, वो कुछ, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये पीएनआईडी में आपको ये दिखा रहा है कि ये स्क्रूड कनेक्शन है, दिस इज योर फ्लैंज कनेक्शन,
ये NC क्या है? NC is normally closed. NC is normally closed, means ये वॉल नॉर्मल प्रोसेस में क्लोज रहेगा, ठीक है? ये वॉल नॉर्मल प्रोसेस में क्लोज रहेगा, ये तभी ओपन होगा जब प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है? यहाँ पे Sir, साइजेस यस the where is the screwed connection and where is the flange connection? I mean the सी ये welded connection. वेल्डेड कनेक्शन इन केस ऑफ वॉल इज नॉट देयर, ठीक है? ये वॉल Okay. आपका यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे आपके वॉल के साथ देयर इज one line on both sides, right? So this shows Yes. that this wall is a flange connection, okay? And you are Okay. seeing that in this wall there is no double lines on both the sides, it is directly connected to the pipeline. So this Okay. shows that this wall is a screwed connection. You can see here also at PSV, you can see there is a double line on both sides, okay? Yes. So this is a flange connection. Here also you can Okay. see this is a flange connection. This is a flange connection, okay? Yes. ओके अब ये 14 24 ये सारी चीजें 6 8 ये सब हमें क्या दिखा रही है? ये हमें साइजेस दिखा रही है। इस वॉल का साइज क्या है, इस वॉल का साइज क्या है, ये लाइन की साइज क्या है, ये वॉल का साइज क्या है, ये ठीक है? दिस डबल डॉट इंडिकेट्स इंचेस, दिस इज 14 इंच वॉल, दिस इज 20 इंच लाइन, दिस इज 4 इंच वॉल, दिस इज 6 इंच लाइन। देखो लाइन नंबरिंग ऐसे लिखा जाता है, दिस इज 6 इंच लाइन, ABO will be the MOC and N16 will be the line number। ये लाइन नंबरिंग का सिस्टम कैसे भी हो सकता है, बट लाइन नंबर में क्या क्या होना चाहिए सबके, अभी जैसे मैंने कहा आपको कि एवरी इंडस्ट्री हैज इट्स ओन लीजेंड शीट, सबका नंबरिंग का सिस्टम अलग होता है, सब में अलग अलग टाइप के इंसान काम कर रहे हैं, सबका तरीका अलग होता है, अंडरस्टैंड करने का तरीका अलग होता है। जब स्टैंडर्ड्स किसी ने सेट किए होंगे लाइन नंबरिंग का, तो सब अलग अलग, कोई पहले लाइन नंबर लिखेगा, कोई पहले बताएगा कि क्या जा रहा है, कोई पहले ये बताएगा कि लाइन की साइज क्या है, ठीक है? प्लीज म्यूट द माइक, whose mic is on, please mute the mic. Sir, I think can you speak with English? Hello, okay, so Hello. line yes, So the person was trying to say, can you please in English? Maybe there is some disturbance. That's why we are unable to hear. But in the chat box, he has written that he is much comfortable in English. okay, I'm using your both the language, no issues, okay? So one So question, this 6 inch, sorry sir, this 6 inch by 8 inch, or maybe this 20 inch by 14 inch, what this exactly means? see, I will come to that point. Yes, I will come to that point. I will definitely come to that point. First of all, we will go with the flow, what we are going on. Okay. So here you can see line numbers की बात अभी हम कर रहे थे. We were understanding about the line numbers, right? So what the line number indicates, that is more important. कि क्या होना चाहिए वो important है. कैसे लिख रहे हो आप, that is not important. So what a line number should have, it should have what, whether organic is flowing, whether aqueous is flowing, whether a gas is flowing, whether a liquid is flowing, it should contain that information. अब आप पूरा ऐसे तो you can't write directly liquid, gas, okay, in the line number. So you have to define the notations. Let's say L for liquid, G for gas, or F for fluid. So अब ये सब क्या है, हमारे प्रोसेस का पार्ट है। तो so in many industries, what guys do, they write process fluid, PF, they write process gas, PG, okay? So there are n number of legends, but a pipe number or a line number always should indicate what is flowing from the pipe, what is the MOC of the pipe, what is the size of the pipe, whether that pipe is insulated or not, what is the line number of that pipe, because line numbering is very important in P&ID. Okay, why it is important?
because there are n number of pipelines in the chemical plants. So line, if you will not give the line number, so P&ID बनने के बाद क्या होता है, that P&ID is gone to mechanical team and mechanical team prepare bill of material, which is also known as BOM. So while preparing bill of material, they extract information from the P&IDs like line numbers. From that line numbers, they took information such as कि कितने इंच के पाइप की कौन सी एमओसी की मुझे कितनी पाइप लगेगी, ठीक है. Let's say you are having n number of pipelines, you are having 6-inch pipeline, you are having 8-inch pipeline, you are having 20-inch pipeline, you are having 14-inch pipeline. But you are having 6-inch pipeline of MOC SS304, you are having 6-inch pipeline of MOC SS316, you are having 6-inch pipeline of MOC CSPTFE. So you can't merge 6-inch into each and every one. So while preparing the bomb, that person has to segregate the information extracted from the P&ID into different parts. Like, first of all, he has to extract the information. After that, he has to segregate in terms of line size, in terms of pipe sizes. After that, depending on pipe size, further he has to segregate that into different MOCs. Okay. So if line numbering goes wrong, so that segregation won't be possible. So that's why line numbering should be different for each and every line. ठीक है, तो हमने देख लिया लाइन नंबरिंग में क्या क्या होना चाहिए. It should have pipe size. It should have further Fluid MOC. service. MOC, service, insulated or non-insulated, MOC. Okay. And finally, Pressure rating. line number. Pressure rating, yeah. Pressure rating should also be there. Very good point. Sorry, The MOC means fluid what, sir? inside. MOC, I told MOC should be there. Okay. So a line number. Sir, what is the meaning of MOC, sir? MOC is material of construction. Let's say you have a pipeline. Okay. And a liquid is flowing from that pipeline. So if I say what MOC pipeline will be there, MOC means material of construction. Which type of material is there for that pipe? Means pipe is of plastic, pipe is of stainless steel. Okay. Pipe is of carbon Okay, sir, steel. understand. Okay. So which type of pipe is there? What is the material? So that is MOC. Further, someone had a question that what is this 6/8 and 20/14? See, generally what happens, this arrow depicts that a gas is going on from here. Okay. So a process gas is going on. This is 20-inch pipeline. And here you are seeing 20 into 14. See, the cost of 20-inch pipeline will be very, very more compared to 14-inch pipeline. Okay. Let's say if I talk about stainless steel. अब स्टील का कॉस्ट जितना उसका वेट होगा उससे उतना उसका कॉस्ट ज्यादा होगा. ठीक है. The cost of steel will be much higher of the higher pipe size because the weight of the cost of pipeline depends on the weight of stainless steel. So आपको पूरा प्लांट में 20 इंच नहीं रन करना. You need to understand, you need to calculate pressure drops and you need to calculate the capacities. So depending on that, line sizing is done. That is a different topic. Okay, how the line sizing is done, it will be a part of a process engineering course, what modules we have selected. So I will just depict here that what is your 20/14. It means यहाँ पे 20 इंच तक का लाइन था. This is reducer. Okay. अब ये reducer में भी types होते हैं हमारे. This is concentric reducer. Okay. So reducer shows that the reducer size is 20/14. Means reducer का एक side is of 20 inch and the other side is 14 inch. And after that,
The complete pipeline is a 14 inch. So 20 by 14 shows that your line size is reduced from 20 inch to 14 inch. So that's why you can't directly just reduce the pipeline. आप 20 inch का pipe लोगे, you will take a 14 inch pipe and you just can't connect it directly. You have to connect it with the help of reducer. So that's why reducer is also shown. Small informations are contained in the P&ID. Very small informations are contained in the P&IDs. ठीक है? So ये reducer है. This is showing that your pipe size is decreasing. Here also it shows that your pipe size is increasing. 6 by 8. यहाँ पे 6 इंच का लाइन है, यहाँ पे 8 इंच का लाइन है. ठीक है? This is PSV. PSV is pressure safety wall. This is pressure safety wall. If anything goes wrong in the system, let's say if pressure is increasing the design pressure of the system, what will happen? The reactor can go off. Okay, the reactor burst हो सकता है. So to prevent the bursting of reactor, this equipment is installed on the reactor. Now you are seeing that set at 70 psig. What it shows means this PSV means pressure safety valve. It has given the set point of 70 psi. Psi is the unit of pressure and G is, what is G? Gauge. It is gauge pressure. Yes. Okay. So 70 psig is the pressure of PSV. It is the set pressure, means जब तक system का pressure, unless and until the pressure of the system reaches 70 psig, that valve means that pressure safety valve will not open. The pressure inside the system can hold 70 psig. If the pressure increases above 70 psig, let's say, so the pressure safety valve will open and it will remove the excess pressure from your system and it will release out from the system and it will again close as the pressure is decreased after relieving the pressure. It is somewhat like a whistle of your pressure cooker. How a whistle above the pressure cooker releases the pressure and again it set down. It has the simple working. Okay, so this is also a main part of P&ID. We show PSV. This is the standard format of showing PSV. This is PSV symbol. We write here as PSV. 11575 is PSV number. 6 inch by 8 inch is PSV size, means one side is 6 inch and one side is 8 inch. 6 inch line is connected to 6 inch side and 8 inch line is connected to the outside. Set pressure is given as 70 psig. Further, you can see on 20 inch pipeline that here PI is written. PI is pressure indicator. Okay. PT is pressure transmitter. Okay. PC is pressure controller. PV is process valve. Okay. Now you are seeing this line. What is this dotted line means? अब यहाँ पे आप देख रहे थे ये स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पे डॉटेड लाइन आ गया. क्यों? It is giving an analog signal. Yeah, this is signal, but what this line is called? This is called process line. Electronic signal. Maybe Yes, instrumentation. This is instrumentation signal or electrically operated signals. ठीक है. अब what is this showing? That we are having pressure controller here. What pressure controller will do? If the pressure is increased from this line, then the pressure indicator will sense and pressure transmitter will transmit that signal of the pressure to this pressure controller, and based on that, if pressure is increased, this control valve will open. कंट्रोल वॉल्व की ओपनिंग 0% से 100% के बीच में रेंज करेगी. जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, the signal will continuously be going to pressure controller and that will forward its signal to pressure valve और process valve. So वो valve जो है वो क्या करेगा, वो आपका 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, ऐसा ओपन होता जाएगा.
As the pressure is reducing, again the signal is continuously going on to pressure controller. So the pressure will be continuously reducing. So the pressure valve opening percentage will also be continuously reducing. यहाँ आपको दिख रहा था reducer जो मैंने बताया 20/14, यहाँ पे उसका उल्टा है expander, यहाँ पे 14 के बाद वो increase हो जाएगा, ठीक है. This is something different which is not covered in this snapshot. I am telling you that this is expander, this is reducer. ये 14-inch valve हो गया. This is flange connection. This is process valve. Sir, what is FL? This is flange connection for control. For control valve, it don't show usually like what we are showing here. The FL, Sir, it is why, written. Yes, yes, FL is flange. Okay. sir, why put Sir, a and square box in a pressure controller? Sorry. Why put a square box in a pressure controller? What's meaning the square box? Okay. See, when a circle is put, means this is locally mounted. Okay. Means let's say here is a pressure indicator. So here you are seeing a circle. Means to read that pressure, you have to go locally mounted, means you have to go to the reactor and then only you can see what is the pressure. If here is a square, so it means with locally mounted, you can also see on the screen. Means you can also see on DCS screen without going locally. Okay, sir. Thank you. Okay. Here also you are seeing that inside circle there is box. So temperature indicator. So what will be the temperature indicator? You can also see on site and you can also see on screen. Okay, sir. Thank you. So this So what this is FL? basic. Sorry, FL is flange. Okay, sir. So anything remaining, is this view of P&ID is clear? Sir, I have a doubt. Yes. Yeah, you mentioned that the control valve is flange type. But Yes. unlike other valves, other flange valves, you have indicated the pipe flange also on each side of the valve. But here, I see that the line is directly connected, something like a screwed connection. Can you explain, Yes. please? So yes, absolutely. So that was I was telling you that for normal operated valves, like the valves which are operated by hand by operators. So in on that generally it is shown like this flange connections. Okay. In case of control valves which are directly operated, by setting on the screen itself, you can operate this valve, or it will be operated directly depending on what reading it is going on. So we write here FL. If FL is not written, then this connection will be shown here. But if FL is written, then this connection will be not shown. So you can see both the things. If you go out in the industry, you will see both the things. For process control valve also, you will see that this type of depiction is shown, and somewhere you will see that they have written FL. As I'm telling continuously that there are complete different legends. So we have to understand a basic view of the P&ID so that कोई भी P&ID किसी भी इंडस्ट्री का P&ID हमें लाके दे दिया तो हमें सब कुछ पढ़ना आना चाहिए. We need to understand each and every P&ID. Okay, clear, sir. Thank you. Okay. So one question. Yeah. Sorry, sir. One question. So on the left-hand side, we have this 1-inch valve. There is only this, as you rightly said, is a screw connection of this valve, but there is no other. On the other side, there is no connection. So is it a bypass valve or something like that? No, it means this is blind. If it has been a bypass, then it should be going somewhere else. Means if it is a bypass line में क्या होगा? What will happen in a bypass line? That it will bypass this line directly and it will go directly and attach here. Okay, but it is not happening here. So it means this is blind. Blind means a blind flange is attached. That wall is closed from the other end. We will use that wall in other cases, like let's say you have a choking here. Okay, यहाँ पे कुछ choke हो गया है. Okay,
if there is a choking here, आपका continuously gas जा रहा है, continuously a gas is going on from this line. Let's say some solid contents, some abrasive solids contents trapped in the gas is continuously entrained with the gas, and it is also flowing, and this nozzle is choked. So what will happen? We will close this valve manually. We will close this valve manually, and we will connect this separately with instrument air or compressed air point. Okay, and we will purge that air with pressure to release this choking. So this valve will not be in use in general process. It will only be used during cleaning purpose, during maintenance purpose. Okay, so that's why it is shown like this. Okay, sir. Clear? Sir, what is ABO? Yes, sir. Yes, sir. See, ABO, it is nothing. I have generally showed the line numbering format. So ABO, let's say, is the MOC. So अब ABO MOC क्या है, उसके लिए आपको उस इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री का P&ID रहेगा, उसका आपको लीजेंड शीट देखना पड़ेगा. अभी जैसे let's say there are n number of MOC of pipe. ठीक है. Let's say MOC, if I talk about MOC, there is SS304, SS316, SS316L, SS304L. Okay, there are n number of MOCs, right? So AB0, let's say आपकी legend sheet में लिखा होगा AB is equivalent to stainless steel SS316. अब इतना बड़ा stainless steel SS316 या SS316L we can't write here. So you will come to know with the help of that legend sheet that AB0 is SS316. It is showing the MOC, and 16 is line number. Okay. Okay, sir. Sir, what is D1? D1 is drain point. आपको Okay, sir. क्लीनिंग करना है, आप वाटर वगैरह कुछ हाइड्रोलिकली क्लीन करोगे तो ये ड्रेन पॉइंट आपको दिया हुआ है कलेक्ट करने के लिए. ठीक है. सो ये एक बेसिक व्यू है. हमारे पास और भी बहुत सारे बेसिक व्यूज है. यहाँ पे आपको एक अलग बेसिक व्यू मिल रहा है. ठीक है. यहाँ पे आपको O2 लिखा है, मीन्स ये O2 एनालाइज करेगा, ये ट्रांसमिट करेगा. O2 मीन्स ऑक्सीजन. कोई गैस का एनालाइजर, गैस एनालाइजर क्यों लगाते हैं? क्योंकि कहाँ पे कौन से पॉइंट पे गैस रिलीज हो जाए, कितना कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये एनवायरमेंट, अभी जैसे हम बोलते हैं कि एनवायरमेंट में 21% ऑक्सीजन है. लेट से अभी कोई रिएक्शन क्लोज रूम में हो रहा है. जैसे जनरली हाई प्रेशर रिएक्शन जो होते हैं वो क्लोज रूम में होते हैं. ठीक है. तो क्लोज रूम में होने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो सकता है इफ कोई और गैस हमारे सिस्टम में से रिलीज हो जाए. If some other gas is being released from the system, then the room is closed. Then what will happen? The oxygen concentration will decrease from 21%. Okay, so any other person or operator can't enter into that high pressure reactor or in that room because the oxygen concentration is quite low and the person can fell and it can be a fatal condition. Okay, so दैट्स वाई ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन दिखाते हैं, और इसको इसीलिए डीसीएस में भी दिखाया हुआ है. स्क्रीन पे दिखेगा, यू विल सी दिस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ऑन स्क्रीन. ठीक है. तो ये भी एक जनरल बेसिक व्यू है. टेम्परेचर इंडिकेटर्स हो गया, टेम्परेचर एलिमेंट हो गया. ठीक है. फिर यहाँ पे एक्सपांडर्स हो गए, ये हमारे नोजल्स हो गए. ओके. टेम्परेचर इंडिकेटर्स विद डीसीएस सिस्टम हो गया. यहाँ पे अगेन देयर इज अ लाइन नंबर. दिस इज एनालाइजर्स ट्रांसमिटर्स. Okay, here you will see FT, flow transmitters, flow element, flow indicators, drain, line. See there, here I have put the another line numbering format. This P denotes process. 11243 is the line number. 6 inches line size. AF2 will be MOC, and 17 will be insulation type. Okay, this is E112. It is a tag number of this equipment. It is showing exchanger. Okay, screwed connection wall. AF1, here you are seeing this AF1 and that side will be AF2. This is spec brake. This is spec brake. अब spec brake क्या होता है? Spec brake is generally provided when you are changing the line MOC.
हमने देखा जब हम लाइन साइज चेंज करते हैं तो हम रेड्यूसर या एक्सपांडर लगाते हैं. वी पुट अ रेड्यूसर और एक्सपांडर व्हेन वी आर चेंजिंग द लाइन साइज. We are changing a line size from 18 inch to 12 inch. Here we have put the expander. So when we will change the MOC of the line, we put here as a spec break. कि भाई यहाँ तक till here we are having the MOC AF1 and after that the MOC will be AF2, let's say. ठीक है. So in that case, a spec break is shown. Here it is exchanger. Exchanger tag number is mentioned. Here you are seeing pressure indicators. Here you are seeing the pipeline. In middle pipeline also you are seeing here that it flange connection is shown. Means this pipe part can be removed. जब कोई पाइप के पार्ट हुआ हमको निकालना होता है जनरल प्रोसेस में या फिर यूज नहीं भी करना है तो हम कंटिन्यूसली पाइप को कनेक्ट नहीं करते, एक छोटा सा पीस भी कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैंज. मतलब ये चीज हमें क्या बता रहा है कि ये पार्ट को हम निकाल भी सकते हैं डायरेक्टली. ठीक है. So this is again a different type of line number. Okay, this is the instrument process. This is set point given. This is transmitters, oxygen analyzers. So अभी हमने सारे basic view, we have seen the different types of basic view of P&ID, right? So from that what we come to understand that what detail does the P&ID provide? If we talk about in one line, it depicts a schematic view of the mechanical components of a system or process. Although some electrical detail is shown, the P&ID is intended primarily to show mechanical equipment, instrumentation piping and controls devices. तो in short हमारे P&ID में क्या क्या होना चाहिए? वो P&ID अगर आप दूर से देखोगे तो from a schematic point of view, it is a mechanical component of a system or process. A P&ID will show that how the process will be going on. But if you go in detail, so some electrical detail will also be mentioned in the P&ID. Some mechanical equipment will also be shown in the P&ID. Some instrumentation piping will also be shown in the P&ID. And some control devices will also be shown in the P&ID. Right? So defines pipe sizes and material specification. अगर हम डिटेल में बात करें, हमने देखा पाइप साइज दिखा रहा है, मटेरियल स्पेसिफिकेशन दिखा रहा है, it is showing the connecting P&ID's number, it shows the system flow, it shows alarms type at the DCS controller, it shows electrical, pneumatic and software connection और ties between the DCS और PLC controller का ties हमने देखा कैसे connected होता है. स्क्वायर में कनेक्टेड है DCS का, उसका कनेक्शन हमने देखा. We saw the connection, pneumatic connection between the locally mounted instrument and the DCS control instrument, right? So here is detail कि हम equipment P&ID में we saw equipment, we saw instrumentation. This LG is level gauge, LSL is level switch low, LAL is level alarm low. Means जब भी level low होगा तो alarm भी बजेगा, DCS में भी अलार्म बजेगा और साइट पे भी अलार्म बजेगा. लेवल स्विच लो मींस जब लेवल लो होगा तो ये स्विच है लेवल का, ये ओपन हो जाएगा. लेवल गेज है हमारे पास. ठीक है. P&ID कंटिन्यूएशन फ्लैग जो हम बोल रहे हैं कि दिस लाइन व्हेन इट इज गोइंग हियर वी कांट शो अ कंप्लीट प्लांट इन अ सिंगल ड्राइंग. So we connect different drawings. Now this line will go to another. This is the outlet of this P&ID. This might be the inlet of another P&ID. ठीक है. We are seeing material specification. We are seeing pipings, right? We are seeing here electrical connections. We are seeing DCS controller symbol. We are seeing software internal connections, pneumatic connections. We are seeing a system of process flow. We are seeing alarm types. See, this is temperature indicator, temperature element. Alarm types mean temperature alarm high, temperature alarm low.
कोई भी सेट पॉइंट हम इसको देंगे लो का हाई का, तो अगर if that temperature crosses on the higher side, so there will be an alarm on higher side. If the temperature goes down, then there will be alarm on lower side. So what are, अब हम एक देख रहे थे सिंबल्स की, हम बात कर रहे थे जो सिंबल्स हमने देखा इतने सारे P&ID में, तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सिंबल्स होता है जो ISA स्टैंडर्ड्स हम बोल रहे थे, इंस्ट्रूमेंट सोसाइटी ऑफ अमेरिका, ठीक है। ISA सिंबल्स जो हम बोलते हैं, इट इज इंस्ट्रूमेंट सोसाइटी ऑफ अमेरिका, also known as the International Society for Measurement and Control. There is a note which I have mentioned. Many clients will develop their own symbols library used in conjunction with ISA. When working with others document, be aware of the symbols as well. Why I am writing this note? मैंने ये चीज पहले भी बताई है कि सिंबल्स जो है बहुत से इंडस्ट्रीज में खुद के भी होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे manufacturing industries, what they will do, they will prepare their own legend sheet. So if you want to read their P&ID, you have to first of all legend sheet. But after this lecture, we will, अभी हमने ये जो बेसिक व्यूज सारे ये सब बेसिक व्यूज देखे, इससे हमें P&ID रीड करना आ गया, और हमें ये भी पता है कि अगर ये सारी चीज से कुछ डिफरेंट हमें कुछ और P&ID दिख रही है, we are seeing something different P&ID of different organization from another system, then what we have to do, we have to ask them, please provide your legend sheet. If you are not able to read P&ID directly, you need to ask them, please provide your legend sheet. So in that legend sheet, everything should be there. With the help of that legend sheet, you will understand कि भाई पीसी को प्रेशर कंट्रोलर बोलते हैं, ठीक है। एएन हो सकता है पीसी को प्रेशर कंट्रोलर के बदले किसी और इंडस्ट्री में वहां पे सिर्फ पीआईसी लिखा हो, प्रेशर इंडिकेटर कंट्रोलर हो, या पीसीओ हो प्रेशर कंट्रोलर का. सो there can be a number of things, but you need to ask them the legend sheet for reading the P&IDs. So सिंबल्स किस किस के अलग हो सकते हैं, डीसीएस पीएलसी कंट्रोलर्स के भी हो सकते हैं, लोकल फील्ड डिवाइसेस जैसे हमने देखा कि राउंड किया है तो हम लोकल फील्ड डिवाइसेस आ गए, पैनल माउंटेड डिवाइसेस आ गए, कनेक्शन टाइप्स जैसे हमने बताया कि मैंने एक जगह एफएल लिख के रखा था, एक जगह मैंने फ्लेंज का लाइन दिखाया था. सो देयर आर डिफरेंट कनेक्शन टाइप्स. उसमें टू अंडरस्टैंड दैट you need to have that legend sheet. Walls types भी आपको legend sheet में मिलेंगे कि ये if this symbol is shown, then it is ball wall, it is butterfly wall, it is globe wall, it is gate walls. Okay, so to understand different types of walls, you also need to look into the legend sheet that which type of wall is installed. अब यहाँ पे we were just seeing that कि okay, wall is there. This is three-way wall. This is three-way wall. Here we have seen this normal wall. This might be which type of wall is there, we don't know. We have to look into legend sheet. This is ball wall. So this type of things are there. With the help of legend sheet, we can understand these things. Okay. Further, industry standard symbols में interlocks भी होते हैं, equipments भी होती है. Then there is device tagging conventions are also there. Now what is interlocks? Interlocks हम इसको बोलते हैं, जैसे ये connected है and this is high and low. So interlock is a statement of instrumentation जो P&ID में लिखी होती है. So अब इसका interlock कैसा लिखा रहेगा? If TE1282 goes above 50 degrees Celsius, then TI128 will sense and TAH will get activate. Yeah. उसका दूसरा लाइन होगा if TE1282 temperature gets below 25 degrees Celsius, then TI128 will sense and TAL will gets activate. ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं जिसको कहते हैं हम इंटरलॉक्स. We have seen the equipment से डिटेल्स मेंशन होते हैं. Then device tagging conventions में डिवाइस के टैगिंग, सारे जो डिवाइस है उसके टैगिंग्स है यहाँ पे 1282 ठीक है. Further, ISA के जनरल नोट्स हमारे पास जो है, that ISA was developed as a way of bringing consistency and uniformity to the instrument and controls world in terms of the definitions and symbols used. अब ISA एक standard form किया गया था. There was a standard formed called ISA to
bring a consistent and uniformity, like सबका P&ID same हो, सबका सब कुछ same हो, but generally we are not seeing that till now, because when you will go to different industry, you will see a different symbols. So this is something fails, but generally जब आप see, when you work in a 90% when you will work in a EPC industry, you will see ISA standards are being followed in terms of symbols and instrumentations and controls. Okay, you will generally see a variation of ISA in manufacturing industry. If you're working in a manufacturing industry, then only you will see that ISA standards somewhat is not followed. Okay, we know that student here should be aware that ISA is a consensus document rather than a mandatory one. अब लेट्स से आप में से कोई हो सकता है कोई ऐसे इंडस्ट्री में जाएगा जहां पे you get an opportunity. Now if I talk about, बहुत सारी इंडस्ट्री अभी P&ID प्रिपेयर करना चाह रही है, बहुत से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जो बड़े स्केल में अब कन्वर्ट्स हो रहे हैं. They need to expand their business, they are expanding their team, they are hiring process engineers, right? So some of you might get an opportunity. So you have that chance. You are learning here that you know that the symbol should be ISA standard. So student here should be aware that ISA is a consensus. So you can tell them we will follow ISA standard. If from start itself you are following that standard, that then it can't go wrong. Okay. So this was about ISA. This is general notes. This will be this is through section 1. ISA has different sections. It composed of 500 to 600 pages there are in the ISA section. Okay, so in each section there are different information. So ISA standard consists information of measurements for instrumentation, for controls, for process equipments, for design sketches, for technical papers, for system, for loop, for logic diagrams, for flow diagrams, for P&IDs. Okay, it is intended to provide sufficient information to enable anyone with a reasonable level of controls or instrument knowledge to review and understand the measurement and control scheme as depicted in a given document. It covers the identification of an instrument and all other. Okay, so ISA general notes. This is generalized notes I have taken from the ISA because this is the most important thing. आपको जाके 500-600 पेज का ISA देखने की, obviously you can go and see, but these are the important points from ISA which you will need in day-to-day life when you will be working in a process industry, or when you will be working as a process engineer or as a chemical engineer in the plant or EPC industry. So you should know that ISA standard was established as a uniform means. सबसे main कोई भी बंदा है तो ISA standard है for instrument and instrumentation systems and measurement and control. It is a mandatory document. Okay. For process equipment symbol, process equipment symbols are not part of the ISA standard. अब process equipment मतलब जो process equipment हमने यहाँ पे देखा, जैसे ये equipment हम यहाँ पे देख रहे हैं. ISA सिस्टम में प्रोसेस इक्विपमेंट नहीं है कि आपका रिएक्टर, हाउ द रिएक्टर सिंबल विल बी, हाउ द पैक बेड रिएक्टर सिंबल विल बी, हाउ द कॉलम विल बी. प्रोसेस इक्विपमेंट, it depends on what equipment a company wants to install. So based on that only we have to show in the P&ID what a fabricator is providing to you. Based on that only you have to show it in the P&ID. So that's why process equipment symbols are not part of the ISA standard. ISA standards में सिर्फ symbols होते हैं जो process equipment नहीं है, but कौन से equipment के symbols होते हैं, जैसे pump, vessels, normal vessels हो गए, heaters हो गए, fans हो गए, heat exchangers हो गए, ठीक है, ये सारे equipments के symbols उसमें होते हैं. But process equipment मतलब any equipment in which a process will be going on, like reaction, hydrolysis, hydrogenation, any process which will be going on in an equipment, they are not
having a standardized symbol in ISA standard. ठीक है? So functional identification of instruments or control loop devices also are having standards in ISA standards. They are also standardized कि first letter क्या होना चाहिए, जैसे PI है तो प्रेशर इंडिकेटर का फर्स्ट लेटर P होना चाहिए, इंडिकेटर का I होना चाहिए, प्रेशर इंडिकेटर इट शुड ऑलवेज बी मेंशन्ड एज PI. PIN नहीं लिखना है. बहुत सारे जगह पे you will see in P&IDs the PIN is written. I have worked in many industries. I have seen that PIN is written as pressure indicator because they are not following ISA standards. Okay, they are 90 years old company and they are following their own standards when they were preparing the P&ID at that time with the help of hand sketch. Now the P&ID is prepared with the help of AutoCAD softwares. Okay, so ISA standards we need to follow. You need to keep in mind that ISA standard is important. Identification letter should be as per ISA. FR flow recorder, not DPR. आपको फ्लो रिकॉर्डर के लिए FR ही लिखना है. लेवल कंट्रोलर के लिए LCV लिखना है, FCV नहीं लिखना है. FCV आपका फ्लो कंट्रोलर के लिए आ जाएगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है while preparing P&IDs. लूप नंबर आप दोगे, ठीक है. दिस इज एग्जांपल ऑफ लूप नंबर. लूप नंबर यू हैव टू गिव लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, लूप नंबर 100. ठीक है, आपको लूप नंबर देना है. कहीं पे कुछ नोट डालना है तो आपको लेट्स से अभी ये P&ID है, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है दिस इज टेम्परेचर एलिमेंट, टाइप इज थर्मोकपल. This is temperature controller, indication only with temperature high and low alarms. अब ये नोट यहाँ P&ID में नहीं लिखना है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है because I am explaining this P&ID in detail with the help of snapshot. What you have to write here? You have to write here note 1. You have to write here note 2, and this note 1, note 2 will be covered in separate document of notes where note 1 is what, note 2 is what will be mentioned in that document. Okay, so this shows that you have to mention that thing in with the help of notes. You may add any clarifying notes you think necessary to your sketches. ठीक है, whatever you want to add, like जैसे मैंने अभी आपको बताया थर्मोकपल है, थर्मोकपल आप नहीं भी बता रहे हो नोट्स में तो that is not important, but if you want to add any clarifying notes, so you can add with the type of standards what I told you. You have to just mention that note 1, and whatever notes you want to mention you can write it separately into a notes list. Okay, further this the sequence in which the instruments or functions of a loop are connected on a diagram should reflect the functional logic or informational flow. मतलब जो भी instruments और function loop में connected है, we saw here this is connected in a loop, so उसका information भी connected होना चाहिए. जैसे यहाँ पे TAH और TL हमने लिख दिया, तो यहाँ पे सिर्फ TI है. टेम्परेचर इंडिकेटर क्या करेगा आगे? अगर इंडिकेटर है तो क्यों है? तो इंडिकेटर हम जाके साइट पे भी देख सकते हैं. यहाँ पे DCS पे क्यों दिया? खर्चा क्यों बढ़ाया? तो कुछ रीजन होगा. अभी यहाँ पे TAH और TL नहीं लिखा होता तो we would be thinking कि why this temperature indicator is being shown in DCS. हमने इतना केबल का खर्चा करके क्यों DCS में इसकी रीडिंग ली? Why we have taken? Because it is connected to alarm, so alarm will be there in the DCS room, so this information is shown. So this is an extremely important point to remember. Be sure the devices shown in the loop are in logical format to reflect how the loop functions work. Okay, further end user is allowed a great deal of flexibility. जैसे मैंने बोला कि ISA standards आपको फॉलो करना है, कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, बट थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है. आप कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हो, बट यू हैव टू मेंशन दैट इन योर लेजेंड शीट. सो लेजेंड शीट को आइडेंटिफिकेशन लेटर भी बोलते हैं, जो ISA स्टैंडर्ड से बनती है. ठीक है,
P&ID symbol standard भी ISA standard से बनती है. If a given drawing uses graphic symbols that are similar or identical in shape or configuration and that have different meanings because they are taken from different standards. अब सिर्फ ISA standards नहीं है मार्केट में, ठीक है? There are many standards. कोई यूरोपियन standards फॉलो करता है. अब ISA अमेरिकन स्टैंडर्ड्स है. Some consultancies follow यूरोपियन standards. So उस केस में क्या होता है? सिंबल्स जैसे ISA सिंबल्स में एक सिंबल का मतलब वॉल है